Once upon a time, in the golden age of spice caravans and sapphire seas, there lived a young woman named Nazira in the sun-drenched city of Katara. एक दफ़ा का जिक्र है, मसाले के काफिलों और नेलम जैसे समंदरों के सनहरी दौर में कतारा के धूप से भरे शहर में नज़ीरा नामी एक नौजवान लड़की रहती थी. She was the daughter of a glassblower, known not for her beauty, though she was beautiful, but for her cleverness, which sparkled brighter than any gem in the souk. वो शीशागर की बेटी थी, जिसकी खूबसूरती नहीं बल्कि जहानत मशहूर थी, जो बाजार के किसी भी नगीने से ज़्यादा चमकती थी. Her mind was sharp, her tongue sharper, and her heart was a quiet sea in which many secrets slept. इसकी अक्ल तेज थी, ज़बान इससे भी ज़्यादा, और इसका दिल एक पुरस्कून समंदर था जिसमें बहुत से राज सोए हुए थे. One morning, as she swept the sand from her father's shop, a beggar cloaked in tattered indigo hobbled to her and said, एक सुबह जब वो अपने वालिद की दुकान से रेत साफ कर रही थी, एक फकीर पुराने नीले कपड़ों में लपटा लिंगड़ाता हुआ आया और बोला, "O child of flame and smoke, give me water, and I shall give you a story worth a kingdom." ए आग और धुएं की औलाद, मुझे पानी दे और मैं तुझे एक ऐसी कहानी दूंगा जो एक बादशाहत के बराबर हो. Nazira handed him a copper bowl filled with cool tamarind water. नज़ीरा ने इसे एक तांबे का प्याला दिया जो ठंडे अमली के पानी से भरा हुआ था. The beggar drank, wiped his mouth, and whispered. फकीर ने पाया, मिना साफ किया और सरगोशी की. At the bottom of the desert of endless wind, buried beneath the bones of ancient empires, lies the pearl of the Jinn Queen. लामतनाही हुआ के सहरा की तह में, कदीम सल्तनतों की हड्डियों के नीचे, जिन्नात की मलका का मोती दफन है. It grants not wishes, but understanding of men, beasts, stars, and even fate itself. ये मोती ख्वाहिशें नहीं, बल्कि समझौता करता है, इंसानों की, जानवरों की, सितारों की, और हत्ता के तकदीर की भी. But beware, the pearl is guarded by her last servant, the clock-eyed panther, who sees through lies and fears no blade. लेकिन खबरदार, ये मोती इसके आखिरी खादम घड़ी जैसी आंखों वाले चीते की हिफाजत में है, जो झूठ को देख लेता है और किसी तलवार से नहीं डरता. That night, Nazira could not sleep. इस रात नज़ीरा सो ना सकी. Her thoughts circled the story like hawks above a lamb. इसकी सोचें इस कहानी के गर्द इस तरह मंडलाने लगें जैसे बाज किसी बड़े के ऊपर परवाज करते हैं. At dawn, she took only a curved dagger, a clay flask, and a silver ring etched with verses from her grandmother's lullabies. सुबह होते ही वो सिर्फ एक खमीदा खंजर, मिट्टी की सराही और अपनी दादी के लोरियों के अशार से मजीन एक चांदी की अंगूठी लेकर निकली. She left a note for her father. इसने अपने वालिद के लिए एक खत छोड़ा. Do not weep. I go to find the truth that sleeps beneath sand and shadow. आंसू ना बहाना. मैं इस सच्चाई की तलाश में जा रही हूँ जो रेत और साए के नीचे सूई हुई है. The journey suffer. The desert of endless wind was not named in jest. लामुतनाही हुआ का सहरा मजाक में ये नाम नहीं रखा गया था. The sands there whispered in forgotten tongues. वहाँ की रीतें भूली बसरी ज़बानों में सरगोशी करती थीं. Nazira met many perils, bone jackals, dust spirits, and once a talking lizard who offered to trade her eyes for safe passage. Nazira को बहुत से खतरात का सामना हुआ. हड्डियों वाले गैदर, खाकी जन्नात और एक बार एक बोलती छपकली ने इससे महफूज रास्ते के बदले इसकी आंखें मांगें. She refused of politely. इसने इनकार किया, लेकिन मुअद्दबाना अंदाज में शुक्रिया अदा किया. On the sixth night, a sandstorm rose like a god's fury. छठी रात एक तूफान इस तरह उठा जैसे किसी देवता का कहर हो. Nazira took refuge in a crumbling ruin, half swallowed by dunes. Nazira ने रियत के टेलों में आधी डूबी एक बोसीदा इमारत में पनाह ली. There, in a hall where silence was thick as oil, she found carvings, old words, older than her city. वहाँ एक ऐसे हाल में जहाँ खामोशी तेल की तरह गहरी थी, उसने कुछ नक्शो नगार देखे. इंतहाई पुराने अल्फाज, उसके शहर से भी कदीम. They told of Queen Meridia, the Jinn of the Sapphire Flame, who ruled
not with war but with wisdom. वो मलका मरीदिया की कहानी सुनाते थे, नेलमी शाले की जिन्नी जिसने जंग से नहीं बल्कि हिकमत से हुकूमत की. Her pearl was her heart, given form. इसका मोती दरअसल इसका दिल था जो शक्ल में ढला हुआ था. When her city was betrayed by men drunk on conquest, she sealed the pearl away, binding it with riddles and sorrow. जब इसके शहर से फतूहात के नशे में चोर लोगों ने गद्दारी की तो इसने मोती को छुपा दिया, इसे पहेलियों और गम में बांध दिया. Nazira whispered the ancient words aloud, and the wall behind her shuddered. नज़ीरा ने वो कदीम अल्फाज धीरे से दोहराए और इसके पीछे की दीवार लर्ज़ उठी. She stepped into a subterranean garden glowing with ghostly lilies. वो एक ज़ीरे ज़मीन बाग में दाखिल हुई जो भूतों जैसे कनवल के फूलों से जगमगा रहा था. In the center lay the pearl, held between two obsidian claws. दरमियान में वो मोती रखा था जो स्याह पत्थर के दो पंजों में जकड़ा हुआ था. And there, silent but unmistakably present, was the clock-eyed panther. और वहाँ, खामोश मगर नुमायां तौर पर मौजूद, घड़ी आंखों वाला चीता बैठा था. Its eyes were silver wheels, ticking with ancient time. उसकी आंखें चांदी की पहियों जैसी थी जो कदीम वक़्त के साथ टक-टक कर रही थीं. Why have you come, daughter of glass and flame? It asked, its voice a song of grinding gears. तुम क्यों आई हो, शीशे और आग की बेटी? उसने पूछा, इसकी आवाज़ रखाते गियर्स के गेट जैसी थी. I seek not riches, said Nazira, only truth. मैं दौलत की तलाश में नहीं आई, नज़ीरा ने कहा. बस सच्चाई चाहिए. The panther bowed its head. Then answer this. What is the shape of truth? चीते ने सर झका लिया. तो फिर ये बताओ, सच्चाई की शक्ल क्या है? Nazira closed her eyes. It is not a line, not a circle, not even a blade. It is a mirror, cracked and held in many hands. Nazira ने आंखें बंद की. ये कोई लकीर नहीं, ना दायरा, ना ही तलवार. ये एक आईना है जो टूटा हुआ है और कई हाथों में थामा गया है. The panther purred, a sound like thunder in a velvet sack. चीते ने गराट भरी जो मखमली थैले में छुपे बादल की गज जैसी थी. You may take the pearl, but know this. Truth does not serve. It asks, it questions, it burns those who clutch it too tightly. तुम मोती ले सकती हो, लेकिन जान लो, सच्चाई खिदमत नहीं करती. ये सवाल करती है, ये तफ्तीश करती है, ये उन्हें जला देती है जो इसे सख्ती से थामते हैं. Nazira nodded. Her hands trembled as she lifted the pearl. Nazira ने सर हिलाया. इसके हाथ कांप रहे थे जब उसने मोती उठाया. For a moment, the room vanished. एक लम्हे के लिए कमरा गायब हो गया. She saw kingdoms not yet born, songs never sung, lovers yet to meet, and the shadow of her own death, not in fear, but in peace. इसने वो सल्तनतें देखें जो अभी पैदा नहीं हुई, वो गीत जो कभी गाए नहीं गए, वो मोहब्बतें जो अभी मिलनी बाकी थीं, और अपनी मौत का साया डर में नहीं बल्कि सुकून में. The return, वापसी. When she returned to Katara, she was not the same. जब वो कतारा वापस आई, वो वही इंसान नहीं रही थी. She spoke little, but when she did, kings listened. वो कम बोलती थी, मगर जब बोलती, बादशाह सुनते. She healed wounds with words, settled disputes with silence, and taught children riddles that would unfold over a lifetime. वो अल्फाज से ज़ख्म ठीक करती, खामोशी से झगड़े ख़त्म करती और बच्चों को ऐसी पहेलियाँ सिखाती जो सारी ज़िंदगी में खलते. Some say she buried the pearl in a garden of poppies. कुछ कहते हैं कि इसने मोती को पूसत के फूलों के बाग में दफन किया. Others say she swallowed it, and that's why her eyes held galaxies. दूसरे कहते हैं कि उसने इसे नगल लिया, इसीलिए उसकी आंखों में कहकशाएं दिखाई देती थीं. But every 100 years, when the wind shifts just so, a traveler in the desert may find lilies growing where no water flows. लेकिन हर 100 साल बाद जब हुआ खास अंदाज से रुख बदलती है, तो सहरा में कोई मुसाफिर वहाँ कनवुल के फूल अगते देख सकता है, जहाँ पानी का नाम और निशान नहीं होता, and hear the whisper of a panther asking, "What is the shape of truth?" और वो चीते की सरगोशी सुन सकता है जो पूछता है, सच की शक्ल क्या है? अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं,
तो अब कहानी दोबारा सुने, इस बार सिर्फ अंग्रेजी में। देखें आप कितना समझते हैं। मगर इससे पहले वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Once upon a time, in the golden age of spice caravans and sapphire seas, there lived a young woman named Nazira in the sun-drenched city of Katara. She was the daughter of a glassblower, known not for her beauty, though she was beautiful, but for her cleverness, which sparkled brighter than any gem in the souk. Her mind was sharp, her tongue sharper, and her heart was a quiet sea in which many secrets slept. One morning, as she swept the sand from her father's shop, a beggar cloaked in tattered indigo hobbled to her and said, "O child of flame and smoke, give me water, and I shall give you a story worth a kingdom." Nazira handed him a copper bowl filled with cool tamarind water. The beggar drank, wiped his mouth, and whispered, "At the bottom of the desert of endless wind, buried beneath the bones of ancient empires, lies the pearl of the Jinn Queen. It grants not wishes, but understanding of men, beasts, stars, and even fate itself. But beware, the pearl is guarded by her last servant, the clock-eyed panther, who sees through lies and fears no blade." That night, Nazira could not sleep. Her thoughts circled the story like hawks above a lamb. At dawn, she took only a curved dagger, a clay flask, and a silver ring etched with verses from her grandmother's lullabies. She left a note for her father, "Do not weep. I go to find the truth that sleeps beneath sand and shadow." The journey. The desert of endless wind was not named in jest. The sands there whispered in forgotten tongues. Nazira met many perils: bone jackals, dust spirits, and once a talking lizard who offered to trade her eyes for safe passage. She refused, of course, but thanked it politely. On the sixth night, a sandstorm rose like a god's fury. Nazira took refuge in a crumbling ruin half swallowed by dunes. There, in a hall where silence was thick as oil, she found carvings, old words, older than her city. They told of Queen Meridia, the Jinn of the sapphire flame, who ruled not with war but with wisdom. Her pearl was her heart, given form. When her city was betrayed by men drunk on conquest, she sealed the pearl away, binding it with riddles and sorrow. Nazira whispered the ancient words aloud, and the wall behind her shuddered. The panther's trial. She stepped into a subterranean garden, glowing with ghostly lilies. In the center lay the pearl, held between two obsidian claws, and there, silent but unmistakably present, was the clock-eyed panther. Its eyes were silver wheels, ticking with ancient time. "Why have you come, daughter of glass and flame?" it asked, its voice a song of grinding gears. "I seek not riches," said Nazira, "only truth." The panther bowed its head. "Then answer this, what is the shape of truth?" Nazira closed her eyes. "It is not a line, not a circle, not even a blade. It is a mirror, cracked and held in many hands." The panther purred, a sound like thunder in a velvet sack. "You may take the pearl, but know this, truth does not serve. It asks, it questions, it burns those who clutch it too tightly." Nazira nodded. Her hands trembled as she lifted the pearl. For a moment, the room vanished. She saw kingdoms not yet born, songs never sung, lovers yet to meet, and the shadow of her own death, not in fear, but in peace. The return. When she returned to Katara, she was not the same. She spoke little, but when she did, kings listened. She healed wounds with words, settled disputes with silence, and taught children riddles that would unfold over a lifetime. Some say she buried the pearl in a garden of poppies. Others say she swallowed it, and that's why her eyes held galaxies. But every 100 years, when the wind shifts just so, a traveler in the desert may find lilies growing where no water flows, and hear the whisper of a panther asking, "What is the shape of truth?" आज की कहानी से आपने कौन सा इंग्लिश लफ्ज़ सीखा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारे साथ आखिर तक रहने का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।